Namaste everyone. Today we are going to look at question answers. Yeah, so how are we? हेलो, आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल आ रही है अरविंद जी। ओके। हाँ शील जी बताइए, आप क्वेश्चंस कह रहे थे ना? हाँ हाँ हाँ। मेरा पहला क्वेश्चन था, लाओ त्सु ने एक बार बताया, लाइक उन्होंने बताया कि बी द वैली ऑफ द माउंटेन, डू नॉट बी द माउंटेन। इसका क्या मतलब है? बी लिटिल लाउडर। हाँ, मैं बोल रहा हूँ कि लाओ त्सु ने कहा है, इन लाइफ बी लाइक द वैली ऑफ द माउंटेन एंड नॉट लाइक द माउंटेन। कहाँ पढ़ा ये आपने? ये लाओ त्सु का है। कहाँ पढ़ा है आपने? ये यहीं पे मैंने लाओ त्सु की जो ताओ ते चिंग वो किताब है ना, हम्म। उसमें भी लिखा है। और फिर मैं बहुत पहले एक पावर ऑफ नाउ में मैंने देखा था, और ये यूट्यूब पे एक चैनल है, उसका नाम मेरे को प्रोनाउंस नहीं करना आ रहा, उसमें भी वो लिखा था। और आचार्य प्रशांत के इसमें भी मैंने देखा था, उनके कुछ लाइंस थे वो। हम्म। बी लाइक अ वैली एंड नॉट लाइक द ऑफ द माउंटेन एंड नॉट लाइक द माउंटेन। हाँ, डू नॉट बी लाइक द माउंटेन, बी लाइक द वैली ऑफ द माउंटेन। तो मुझे बिल्कुल से तो नहीं दिख रहा है, इसका कॉन्टेक्स्ट देखना पड़ेगा, उन्होंने क्यों कहा था ऐसा। दिस माइट नॉट बी द स्टैंड अलोन स्टेटमेंट। वो जिस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने कहा था वो आपको पता है? नहीं, मैं नहीं बता सकता। हम्म। एक बार गूगल कर लिखते हैं। हाँ जी। मतलब इसमें कैसा था ऋचा जी, कि मैं ओशो की कुछ लाइनें पढ़ रहा था जब भी हम्म। मैस्कुलिन फेमिनाइन एनर्जी में। तो उसमें ओशो जी ने जो कहा था उसमें ऐसा था कि लाइक उन्होंने बोला था हस्बैंड और वाइफ, ठीक है या? तो उन्होंने बताया था कि औरत हमेशा हस्बैंड के पैरों में बैठती है, ठीक है, लेकिन फिर भी वो बहुत स्ट्रांग होती है। ओके। तो ताओ ते चिंग में बोलता है, इट सेज दैट द वैली स्पिरिट डाइज नॉट एट द सेम the female mystery thus do we name its gate from which at first they issued forth is called the root from which grew heaven and earth. Long and unbroken does its power remain, used gently and without the touch of pain. And there are various ways that one would look at it. So, one thing that's coming up is valley and mountain actually go together. Deeper the valley, higher would be the mountain. So, for the mountain to exist, valley becomes essential. So, in certain way, you can also say that existence of valley actually supports the presence of a mountain. But people do not recognize the valley, people recognize the mountain. What is recognized is what splashes, what is prominent, what is pronounced. But that which is silent, that which is grounded, humble, that which is just accepting is not really recognized. We recognize
student who stands first in the class. We recognize people whom we say that they have achieved certain things in life. But we do not recognize what has made them do it. So duality would say that if one thing is possible, the opposite is there. And that's why it is possible. You will not be able to appreciate white without the existence of black, and black without the existence of white. So to understand that there is something called as white, existence of black becomes a must, or existence of a contrast or duality, as it looks like to be the polar opposite, becomes a must. So surely, mountain that stands tall, that stands in its glory, as if it's saying something, as if it's reaching the heights, it's touching the sky. That mountain is saying so much to so many people, to everybody, to the entire existence. One longs to be like a mountain. One wants to be that will-powered, that strong, adig, जिसे कोई हिला ना सके. Nobody recognizes that there is something called as valley because of which that mountain is present. And mountain could be in its glory. However, valley is that compassionate ground because of which the mountain is even existing. That is a support structure behind it. That is the backdrop that is supporting it. So when in this context, or that you said, Shilji, about that female and male thing, if you look at the entire existential process, and I'm not talking about the feminine energy and masculine energy, even feminine energy for that matter, the characteristic of it is more accepting. It has higher endurance of pain. Its tensile strength is very high in terms of breakdown. The characteristic of feminine is creativity, giving birth to life. So in this context, and it is that feminine energy that supports that masculine energy, because of which that masculine actually is seen as a powerful thing. So in this context, mountain is being compared to that masculinity and valley is being compared to the femininity. And so they are saying that be compassionate, be that which is willing to accept, give space, which is giving birth, which may not be pronounced to the world, which may not come in the limelight as the one because of which something is happening. Yet, without her presence, that which you see does not happen. And so, be like that valley of the mountain and not like the mountain. So all in all, if you look at our entire challenge of life is we want things our way. And that is what ego does. Ego says that I am, I exist, and it wants to know the existence of its all the time. That is the entire craving for. That I need to know that I exist. मैं हूं, ये मुझे जानना है, ये मेरी आवश्यकता है. तो वो हर वो कुछ करता है जिससे वो अपने होने का अनुभव सबको दे सके.
क्योंकि उसके पास अपने होने का कोई अनुभव है नहीं। वो है, ये उसको पता दूसरों के द्वारा पता चलता है। तो जब उसे कहा जाता है कि तुमने तो ये किया तो मैं हूं, जब उसे कहा जाता है कि तुम्हारे कारण ये हुआ तो मैं हूं, तो अहंकार करता क्या है कि वो पहाड़ की तरह बड़ा और ऊंचा बनना चाहता है, विशाल बनना चाहता है, जो खड़ा है, जो दिखता है, जो दूर से ही आपको दृष्टिगत हो जाएगा। किंतु वैली, खाई, उसका कुछ पता ही नहीं चलता है। वो कितनी गहरी है वो भी नहीं मालूम चलता है। और जीवन के प्रति यदि हमारे भीतर एक गहराई आती है ना, तो जीवन सुंदर होने लगता है। ऊंचाई से ज्यादा मायने हैं गहराइयों के। जब आप गहरे उतरते हैं तब आपको मोती मिलते हैं। तो वहां पे संभावना है कि शेष आपके पास जो कोई भी आता है ना, वो भी न्यूट्रिशन पाता है। So in this case, it's more about psychological nutrition. And rather psychological nutrition, it is more about the process of giving birth to yourself. तो वो एक प्रकार से गुरुवत हो जाती है, because it is allowing every life form to exist in its own space and is compassionate to all of that and is not discriminating. So when you become such that you are not discriminating, you become non-judgmental. When you become non-judgmental, your opinions starts to fade away. When the opinions start to fade away, you do not know about yourself through the opinions that you make. You just are. And then there is being. So that's what is being said in this particular phrase. कुछ क्लियर हो रहा है ये? हाँ क्लियर हो रहा। आप जब भी बता रही थी ना, तो यू आर आस्किंग फॉर दैट रेफरेंस ना, लाइक so it was basically said about the water, like water is referred like that. So when you said that, no, so water always flows to the lowest level, Yeah. right? Hmm. So And it nurtures everything. That's what you said, yeah, no? the water will not stay in the mountain. It will come down and it will nurture the valley to allow the life to exist. माउंटेन्स में आपको गांव खेड़े नहीं मिलेंगे, वैलीज में मिलेंगी. So it's more about being life nurturing, and to be life nurturing you have to become nobody, then life can get nurtured. I didn't understand this point, रिचा जी। आप जब ये बता रहे हैं तो प्लीज बताइए जरा। जब तक आप हैं, जब तक अहंकार है, तो अहंकार हर समय अपने रास्ते ढूंढेगा ना, अपने हिसाब से चीजें चाहेगा। तो वो जीवन को नर्चर कैसे करेगा? उसके पास तो अपने तरीके होने चाहिए ना। लाइफ को नर्चर करने के लिए, यानी जीवन को, अस्तित्व को उसके तरीके से रहने देने के लिए आपको शून्य होना पड़ेगा, आपका विघलन चाहिए, आपको डिसॉल्व होना पड़ेगा। वैली अगर खड़ी हो जाए कि मैं हूं, मेरे ऊपर ये पेड़ पौधे क्यों हैं, मेरे ऊपर ये जनजीवन क्यों है, मेरे ऊपर ये नदी क्यों बहती है, तो वो सब नहीं हो सकता ना। पर ठहराव वही हो पाता है, बिकॉज इट इज अलाउइंग ऑल दैट टू हैपन. सो लुक एट इट फ्रॉम द perspective of what characteristic of valley you need to imbibe.
ठीक है। ओके, बढ़िया। और आपने एक बात अभी बोली थी, लाइक नो, यू नीड टू गिव बर्थ टू योरसेल्फ, ऐसा कुछ आपने कहा था, मतलब इतना ही मेरे को याद आया। उसका क्या मतलब आप बताना चाह रही हैं? मुझे इस बात पे ना ओशो हमेशा याद आ जाते हैं। He said that giving birth is a very beautiful process, but then before any other person, give birth to yourself. जन्म देना बहुत ही खूबसूरत बात है, किंतु सबसे पहले फिर आप स्वयं को जन्म दीजिए। हमारे यहाँ जो शास्त्रों में द्विज का पूरा स्कोप है ना, जो कॉन्सेप्ट है, वो भी इसी बात पर है कि पहला जन्म जो हमको मिलता है, जिसको हम बायोलॉजिकल पेरेंट्स भी कहते हैं, वो शरीर का जन्म है। अभी आप वहां से आत्मन तक नहीं पहुंचे, किंतु जब आप स्वधर्म पर चल करके आत्मन तक पहुंचते हैं, तो आपको पता चलता है कि जिसने जन्म लिया था, क्योंकि जन्म किसने लिया था? जन्म वृत्तियों ने लिया था, तो उसका एक नाम दिया गया, उसके एक माता पिता कहे गए, उसका एक जन्म स्थान कहा गया। अभी वो सीमित है, शरीर की परिधि में है। और जब आप स्वधर्म पर चल करके उसे होने देते हैं जो आप वाकई हैं, तो अब आपको पता चलता है कि अरे, जिनको तो मैं माता पिता समझता था, वो तो पूरा पूरा शारीरिक प्रक्रिया है। जिसको मैं ही समझता था कि मैं ये शील हूं, वो तो मैं हूं ही नहीं। तब पता चलता है कि मैं तो क्या कुछ हूं। तो पूरा आपका जो अस्तित्व है वो विगलित हो जाता है। तो या तो वहां पर आप अहम ब्रह्मास्मि बोले, या फिर निर्वाण बोले कि अब मैं बचा ही नहीं। तो जो उस क्षण प्रकट हुआ, वो ही आप हैं, और उसे ही कहते हैं असली जन्म। In certain way, that is the responsibility for which we all come on this planet. That is the only responsibility, to give birth to yourself. देखिए ना, जन्म देना कितनी खूबसूरत बात है कि जन्म को हम कितना सेलिब्रेट करते हैं। एक शारीरिक जन्म को जब इतना सेलिब्रेट किया जाता है, और वो कुछ लोग सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि शरीर के साथ कुछ लोगों का रिश्ता होता है, तो जिनका रिश्ता होता है वो उसका आनंद मनाते हैं। तो यहाँ तो वो जन्म है जिसके साथ पूरे ब्रह्मांड का संबंध है। तो सोचिए किस स्तर का आनंद होगा, किस स्तर का सेलिब्रेशन होगा, and how beautiful that would be. Even to imagine it is so difficult. And then every moment becomes a celebration. लेकिन हमारी सीमित बुद्धि शारीरिक जन्मदिन पे बहुत खुश और हर साल मनाती है। और हर साल जब मनाती है तो उसे ये भी नहीं पता होता है कि अरे, ये मैं क्या जन्मदिन मना रहा हूं। अभी तो शारीरिक मृत्यु के 1 साल और नजदीक आ गए। So the moment you turn 30, if suppose your life is supposed to be 80, you are just 50 years away your physical death. Moment you turn 60, you're just 20 years away of your physical death. So you're actually coming closer to death every time, no? With every passing year.
So what is that you're celebrating really? That I'm coming closer to death? Physical death? And if you can really start celebrating that, then you will also start to become aware of the death that we go every moment, which means every moment you are anew. That means you will not be breaking, you will not be caught in your patterns, that then you will not be identifying with this is who I am. Who am I का जो पूरा definition है अपने लिए, वो जला जाएगा, evaporate, धुआं धुआं. ठीक है? Okay, great. हम्म.